Hi everyone, welcome back. Well, before I disclose the topic of today's video, I want to caution you on one thing guys. ठंड बहुत हो गई है, अपने आप को ठंड से बचा के रखिएगा. लास्ट थिंग दैट यू वुड वांट इज कि आपको ठंड लग जाए और आपकी हफ्ते 10 दिन की पढ़ाई खराब हो जाए. तो प्लीज सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस ठंड. और वैसे ठंड में पढ़ने का मजा ही अलग है, रजाई में और चाय के साथ. तो मजे लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए. और आज का जो टॉपिक है गाइस, दैट इज अबाउट बुक्स यूज बाय टॉपर्स और टॉपर बुक लिस्ट फॉर सेबी ग्रेड ए. हमने काफी बार बुक लिस्ट की बात की है, बट आज के वीडियो में हम वो बुक लिस्ट की बात करेंगे जो टॉपर्स ने अपने इंटरव्यूज में बताई हैं हमें, उनसे जब हमने चैट की है तब बताई हैं. Many of the resources remain the same that we would have been telling you in other videos, but कुछ नई चीजें निकल के आई हैं वो मैं आपको बताऊंगा. और इसको मैं उस पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं कि जिन लोगों ने सेल्फ प्रिपरेशन की थी. Many of them have been part of EduTap courses. उन्होंने सिर्फ EduTap का कोर्स फॉलो किया था, बट कुछ लोगों ने सेल्फ प्रिपरेशन भी की थी. तो सेल्फ प्रिपरेशन में उन्होंने क्या क्या बुक्स, क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए, उनकी बात हम करेंगे. और आगे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाना चाहूंगा गाइस. दिस इज comprehensive guide for SEBI grade A manager. If I was at your place, I was preparing for SEBI, I would have been looking for questions such as SEBI करती क्या है भाई, SEBI में क्या डिपार्टमेंट्स हैं, फंक्शंस क्या हैं, SEBI के एग्जाम से रिलेटेड पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, कौन सा पेपर कितने नंबर का है, कट ऑफ्स कितनी गई हैं, क्वेश्चंस कितने आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, रिसोर्सेज क्या है, बुक लिस्ट क्या है, सैलरी क्या है, n number of questions in my mind. And they can all get answered just through one resource. What is that resource? This is that comprehensive yet very compact resource. Colorful है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा. It has been made after a thorough research और आपको ये फ्री मिल रही है. Just go to the description of this video. There is a link to download this guide. उसको डाउनलोड कीजिए और आज ही पढ़िए. It will be a excellent source of motivation for you. Now, चलिए बुक लिस्ट की बात करें तो पहले आई वुड बी टेलिंग यू अबाउट फेज 1 पेपर 1 एंड देन वी वुड डिस्कस अबाउट पेपर 2 व्हिच इज कॉमन टू फेज 1 एंड फेज 2. So if we first talk about phase 1 paper 1, what I have seen is that most of the people who have got selected, they have actually practiced QRE through reverse engineering. Maybe they have prepared it before for other exams, but for specifically if I talk about SEBI, mainly reverse engineering has worked for them, where they have been solving a lot of MCQs on quant, reasoning and English. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थोड़े एक्सेप्शंस हैं जो भी सीएस इस एग्जाम को देते हैं, कॉमर्स वाले आप कह लीजिए. दे हैव प्रैक्टिस थ्रू सम बुक्स, बट मोर और लेस आई कुड सी काफी लोग सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग से फॉलो कर रहे हैं इसको. और क्वेश्चंस दे आर अवेलेबल ऑल ओवर द इंटरनेट. आई थिंक यू कैन बाय एनी टेस्ट सीरीज एंड दैट कैन बी सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर क्यूआरई. फॉर करंट अफेयर्स, many have used EduTap, many have used Affairs Cloud, but एक से ज्यादा किसी ने रिकमेंड नहीं की है. दो many would have read, but at the end they are recommending that you read only one, either Affairs Cloud or EduTap. सेबी में थोड़ा करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा नहीं है, it's not that critical, so you can read either of them, but this is one thing which many people are recommending, solving a lot of MCQs. और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, सर shall I stick to one source or two sources or three sources for current affairs? See, you cannot cover more than one source, but still I would say that you should go for 1.5 source. And what is that 1.5 source? One, the original source, that is EduTap or Affairs Cloud, and that 0.5 source is n number of MCQs from any source that you get. कर लो भाई, MCQs मत छोड़ो. MCQs are a very good way to retain, और काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चंस अटक जाते हैं एग्जाम में. So this is about phase 1 paper 1. Very simple. Do not make it complex for you, because at the end of the day you just need to score bloody 30 marks. That's it. And I mean, you need not fear about QRE anymore. If I talk about phase 1 and 2 paper 2, now obviously I would repeat again, जो EduTap से पढ़े थे उन्होंने EduTap का कोर्स फॉलो किया. Those who did self preparation, one of the most common source and I think which is ubiquitous for all of us is Google. सबने Google तो यूज किया ही किया है, right? So this is not something I would say that at some places they would have used, at some places they would not have used. ये तो एक ऐसी चीज है जो सबने यूज की है if they have self prepared. In addition to that, क्या उन्होंने क्या बुक्स या रिसोर्सेज फॉलो किए हैं, हम उनकी बात करेंगे, ठीक है. बट गूगल तो
करना ही, मतलब इसके बिना तो सेल्फ प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती है। तो मैनेजमेंट की बात करें, सो आई थिंक ये दो बुक्स का नाम सबसे ज्यादा लोग कहते हैं, एल एन प्रसाद और टी एन छाबड़ा। तो आप यू कैन चूज आइदर ऑफ दीज, दो आई मेनली रिकमेंड एल एन प्रसाद, बट मेनी ऑफ देम हैज आल्सो रेड टी एन छाबड़ा. And again, though yes, I told you Google specifically before that everybody would have used that in almost all the subjects, but management में तो Google बहुत ज़्यादा use किया है, because topics are very generic. If you Google a lot, you will find almost every topic on the internet, right? तो यहाँ पे Google का importance और भी बढ़ जाता है in case of management. That is what toppers tell us. Costing में, though many people from commerce background would have used their own books that they would have studied in their universities, but this book, M.N. Arora, very famous author, this book has been read by many people, and many people, if they have not used this book, they would have gone for ICAI material. Ye ICAI material is not Institute of Chartered Accountants of India, no, it's of Institute of Cost Accountants of India. ठीक है, तो ये ICAI Chartered Accountants वाला नहीं, Cost Accountants वाला है. तो आप अगर ICAI, जिसको हम कॉस्ट मैनेजमेंट ICMAI भी बोलते हैं, ठीक है, तो मुझे इसका ज्यादा डिटेल पता नहीं है ICMAI है या ICAI है, बट ये लिंक है, राइट. और उसमें से इंटरमीडिएट स्टडी मटेरियल में से पेपर 8, पेपर 10 एंड पेपर 15, ये आई थिंक फाइनल स्टडी मटेरियल में से है. यहाँ पे जो फाइनल है इसमें से पेपर 15 एंड इन द इंटरमीडिएट पेपर 8 and 10. Many people have done costing through this also. So either you can use this book or you can use this ICMAI study material, if I do not have to call it ICAI, and intermediate paper 8 and paper 10 and final paper 15. But do read it very selectively. Do not try to rush through. Try to understand. It's not easy. It's complex. But given the time, you can understand it. So costing में ये किया है लोगों ने. और finance में again, many would have done the topics through Google, because most of the things are available on Google. If you have sufficient time, you can Google it and learn it. काफी लोगों ने ये बुक पढ़ी है, भारती पाठक, in their preparation. But I think it's more of a book that can set the basics, though it will not help you cover the syllabus directly. बाकी कुछ students ने, because we recommended, though these are not very famous books, कुछ ने ये भी पढ़ी है, Principles and Practices of Banking, because in this, in module A of this book, you will get financial system, which is here. Module A of this book, you will also get financial markets, which is here. And module C of this book, you will get financial inclusion, right, which is this part here. So काफी टॉपिक्स आपको यहाँ पे छोटे छोटे मिल जाएंगे that can help you in your preparation. Then there is another book, Bank Financial Management by Macmillan Education. यहाँ से forex market is covered in module A, which is kind of this part. You have to read it very selectively, and derivatives are also there in module C, which are there. And apart from that, this one, alternate sources of finance, private and social cost benefit, and public private partnership, these have been mostly done through Google. Is बहुत आसान है, these are not that technical, you need not refer them from any book. And for these last two parts, E and F, these are related to economics. So many people used Indian Economy by Ramesh Singh, many people also used Uma Kapila, right? So you can use either of these books. If you have read them, you can refer them. Otherwise I would recommend Indian Economy by Ramesh Singh. ठीक है, काफी लोगों ने NCERTs भी रेफर की हैं फॉर द बेसिक्स, बट NCERTs में ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल नहीं है. सम ऑफ दीज टॉपिक्स आर अवेलेबल विच यू कैन रीड फ्रॉम द NCERTs ऑफ 11th and 12th, बट बेसिक्स के लिए अच्छी हैं. बट ये दो बुक्स में से इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और उमा कपिला की जो बुक है, उसमें से आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन योर सिलेबस मिल जाएंगे. कमिंग ऑन टू कंपनी लॉ, very rarely I could find people who would have read company law through the BEAR Act, which is given on the website of Ministry of Corporate Affairs. I think most of them, अगर उन्होंने self preparation किया है, they have covered company law through YouTube videos. तो एक common problem जो उन्होंने बताई YouTube videos में, that many of the videos are old. So you try to find out recent videos, क्योंकि काफी clauses change हो जाते हैं. Or if you are finding some teacher which has put old videos but you find it very relatable,
then always check the facts from the original website. ठीक है, तो YouTube videos is a very good medium to cover company law. Then books on commerce and accounts, I think 80% people would recommend you NCERTs, those who have cleared this exam, जिसमें कि 11th की NCERT, 12th की NCERT पार्ट 2 एंड 11th की NCERT पार्ट 1 एंड 2. ठीक है, ये उन्होंने पढ़ी है. आई हैव आल्सो हाइलाइटेड द चैप्टर्स व्हिच एक्चुअली आर mapped to your syllabus or which are important for your exam. So you can pause your video here, take a screenshot of this and read these selective chapters only. Baki, many of the topics are not there in your syllabus. For example, preparation of final company accounts, right, which is given here. So for these kind of topics, people referred ICAI material, Institute of Chartered Accountants of India. On their website, they have material for foundation, intermediate and final. So intermediate may you will find preparation of final statements, right, which is this one here, point F. And then in the ICAI intermediate module itself, you will find bonus shares, rights, ESOPs and buyback. ये सारे यहाँ पे given है, right? So this one point D and E. ठीक है, ये पॉइंट डी और ई which are in your syllabus can be covered from ICAI intermediate module, and along with many of the people also read SEBI regulations on buyback, bonus and rights issues, because ultimately company ICAI module में mostly it is covered from company law perspective, but you also need to know the SEBI regulations on buyback, ESOPs, rights and bonus, and they are actually covered in SEBI regulations which are given on the SEBI website. ठीक है, but अगर आप SEBI regulations नहीं भी कर पाते हैं, I think covering ICAI module can be self-sufficient. So this is about commerce and accounts. There is one more topic in commerce and accounts, which is accounting standard, point B. So what I could find is that people were not able to understand from the books, though I personally recommend DS Rawat. So many of them used YouTube videos. Again, if you search accounting standards on YouTube, you will find a lot of videos by different mentors. So you can find one which is easy for you to understand, but make sure कि videos recent हो, नहीं तो वही कुछ staleness का issue आ जाता है. And for economics, there is two parts, macro and kind of macro. This is micro, this is macro, the B part. For macro, Indian economy by Ramesh Singh or Uma Kapla. Again, the standard economics books or NCERTs. And for A part, micro, many of them used IGNOU notes. I'm not sure where exactly you will find this on IGNOU website, but I think IGNOU, बहुत लोगों ने बोला है कि उन्होंने जो माइक्रो पार्ट है वो IGNOU की वेबसाइट से पढ़ा है. So you can find such things on IGNOU website. या फिर this book, which not many of them have read, but still I would recommend, अगर आपको notes वगैरह नहीं मिल रहे हैं IGNOU के, use Principle of Microeconomics by HL Ahuja. थोड़ी टफ लगेगी initially, but it would help you cover everything comprehensively. तो ये resources है guys जो पता है, and yes, many of them who did self preparation, resources मैंने आपको बता दिए हैं, but one thing which I found very common is that many of them had solved a lot of MCQs. जो EduTap का MCQ course है, many of them have bought it. ठीक है, तो in case you're looking for MCQs, there is a specialized course on SEBI MCQs जिसमें I think 4,000-5,000 MCQs हैं on paper 2. You can enroll into that and you will get a lot of MCQs to practice, which will not only enhance your knowledge, but it will also help you enhance the application of whatever concepts that you would have already learned. ठीक है, तो ये कुछ resources हैं guys, and with this I think this is what all I can tell you from my experience. But एक चीज जो आपको याद रखनी है, it's not about the resources actually कि यही books लेके हमें पढ़नी है, आप पढ़ सकते हैं, but one thing which is not coming out through the message is that it was not only about the books. उन्होंने एक books को कैसे पढ़ना है, that they also learned, which no book can make you learn. For that you would have to go through the syllabus and PYQs. अगर आपने syllabus और PYQs देख लिए, अच्छे से समझ लिए हैं, then only you will get an idea कि कैसे question आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितने difficult आते हैं, कितनी depth तक पढ़ना है. You will get a clear idea. ठीक है, तो सिर्फ इन बुक्स को पढ़ना नहीं सीखना है,
इन बुक्स को कैसे पढ़ना है, दैट इज ऑल्सो यू नीड टू लर्न। ठीक है, तो वो कोई बुक नहीं है उसके लिए, वो आपको उसके लिए जो बुक है वो PYQs और सिलेबस है, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, सो आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल द पीपल हु आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन एंड सेबी बीइंग डिलेड नाउ, राइट। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। अगर आप प्रिपरेशन छोड़ चुके थे या शुरू करने की सोच रहे थे, इट्स अ वेरी राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन, एंड you will have sufficient time now in my opinion. So that's it from my side guys. Now आपको क्या करना है, आपको अच्छे से तैयारी शुरू करनी है, and you have to promise me, you have to take an oath with me today, you have to choose your attitude today. टॉपर्स और आप में क्या फर्क है, आपके पास भी वही रिसोर्सेज है, आपके पास भी वही टाइम है, आपके पास भी अल्टीमेटली वही मेंटोर्स हैं। द डिफरेंस इज द एटीट्यूड, यू हैव टू चूज योर एटीट्यूड। एक बंदा है जो सिलेबस को देखकर प्रिपरेशन करते हुए इरिटेट हो रहा है, बर्डन्ड फील कर रहा है, ठीक है, मतलब ओवरवेल्म्ड हो रहा है कि मेरे से नहीं होगा, गिविंग इट अप। सो दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड। व्हाट यू नीड इज cheerful, hopeful attitude that yes, I'll clear this exam no matter what. So you have to promise me today that if you want to prepare for SEBI seriously, you will choose the right attitude, and that right attitude is that you will not be burdened, you will not feel irritated, rather you would be hopeful and cheerful to give your 100% to clear this exam. So just promise me by writing this in comment window that sir, I will be cheerful and 100% hopeful to clear this exam, and I'll give my best. I repeat, you have to type sir, I would be cheerful and 100% hopeful to clear this exam, and I'll give my 100%. Thank you. Have a nice day. Bye bye.